गार्ड्स अलग अलग तरह के लाए जाएंगे। Quickly of yesterday's, we've spoken about 3 lakh crore emergency working capital facility. We have also spoken about no global tenders for 200 crore, up to 200 crore for Indian, small companies also to bid for those and so on. So yesterday's announcement, I thought I'll very quickly give you. I will be providing this one slide. I'm spending not very much of a time on that. I'll move over to talking about one thing there. If you can please go back to the previous slide. One thing there on the tax deduction at source and tax collected at source, where we've reduced the rate by 25%. I will, after the presentation, have Revenue Secretary give you a clear explanation of who it includes and who it doesn't. So the TDS and TCS explanation, you have the Finance Secretary next to me, who is also the Revenue Secretary, who will be able to explain it. But otherwise, that slide will be given to you. So instead of going too much into detail, I just want to highlight the fact the EPF support of paying 24%, the 12% of employer, 12% of the employee is borne by the Government of India. 24% is being borne by the Government of India for the past 3 months, and we have extended that for the next 3 months also. June, July, August is also getting added. This is something which I did mention yesterday. And similarly for others, it has been reduced from 12 to 10% for the employer and the employee. However, the employee will get the 10% for the private, for the government-related public sector undertakings, where the government pays the 12 plus 12. पिछले कल जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए घोषणा की गई थी, उसका बड़ा कारण ये भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 तारीख के भाषण में कहा भी था कि हमारे लघु मंझोले उद्योग जो हैं, ये जो हमारे एमएसएमई हैं, ये करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। और इसीलिए पिछले कल लाखों करोड़ रुपए का जो बेनिफिट दिए गए, या मैं कहूँगा सहयोग दिया गया। इन लोगों ने कभी मदद नहीं मांगी, सहयोग मांगा, और सहयोग देने का काम कल भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। और उसमें ही एक बड़ा सहयोग था। मार्च, अप्रैल, मई महीने में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हिस्सा भारत सरकार दे रही है, और अब इसको अगले 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त तक और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो 12% दोनों को देना पड़ता था काम देने वाले को, अब उसको 10% कर दिया गया है। लेकिन जो भारत सरकार के सेंट्रल पीएससीज हैं, वो अपना 12% ही देंगे। I go over to today's announcements. I said there are three steps that we want to explain about the migrants. The first thing relates to free food grain. Free food grain supply to all migrants for the next 2 months. How is this? You're aware, we had already announced that for the public distribution system-based, card-based people who get their regular quota of rice or wheat and in their residences, we had added free 35 kgs for them, either of rice or wheat, and also said 5 kgs per individual, but per card 1 kg of pulse was announced earlier. And that additional 5 per month kg of wheat or rice was being given free. That was made clear. Now what we are saying is that continues, that remains intact. But for those who are non-card holders, meaning they are neither under the National Food Security Act, nor are they holders of any state-level cards, for them, they shall be given 5 kgs per person of wheat or rice, or 1 kg of chana, so that is for per family. And if the person is remaining without card, he can also get it. We are engaging with the state governments to make sure that they know where these migrants are, they can approach them and give them, because most of these migrants who have no cards are staying in those camps which are being run either by the government or by the NGOs, and therefore
based on a rough assessment which has been given to us by all the state governments, we think there are about 8 crore migrants for whom benefit will reach through this free food grain supply. The central government will take the cost and they will not be charged. 3,500 crores will be spent on this intervention within the next 2 months. So I know migrants are also moving out, either they're going back, very few are coming back. Irrespective, we are saying for the next 2 months, they shall get free rice or wheat and also 1 kg per card, per family. Without card also, you can get your rice, wheat or wheat or chenna. So this will reach through the state governments. State governments will be implementing agencies. They will identify the migrants. They will take care of the full distribution and they will provide the details. The initial assessment is what I've told you. The numbers may change depending on how the state governments are going to. We've made provision for this many. That's exactly what I want to convey. प्रवासी मजदूर जो भारत और मैं कहूँगा राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है. അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികളാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. 3 ഇനങ്ങളിലായാണ് അവരിലേക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എത്തുന്നത്. അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ധനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചത്. എല്ലാ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും അടുത്ത 2 മാസത്തേക്ക് സൗജന്യ ധാന്യം ലഭിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കും 5 കിലോ ധാന്യം വീതം ലഭിക്കും. അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് കാർഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ആനുകൂല്യം നേടാനാകും എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ഏത് സംസ്ഥാനത്താണോ അവർ താമസിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള കടകൾ വഴിയായിരിക്കും ഈ ഭക്ഷ്യധാന്യം വിതരണം ചെയ്യുക. 8 കോടി അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇതിന്റെ നേട്ടം ലഭിക്കും എന്നാണ് ധനമന്ത്രി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വഴിയാണ് വിതരണം. He said 5 pillars and one of them is talking about technology driven systems. This is one classic example for that, where in order to benefit migrant workers, we are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country as you move along. So if there is a ration card holder, today he is in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So national portability, which is now being defined as one nation, one ration card. One nation, one ration card will be implemented, and by August 2020, which is another 3 months, within 3 months, 67 crore beneficiaries in 23 states, which means the 67 crore beneficiary is 83% of all the PDS population that we are talking about. 83% of all the PDS population will get covered by this one nation, one ration card. And we assure 100% coverage of national portability of these cards by March 2021. 83% is already done. So all the states and union territories will complete full FPS automation by March 2021. आज के समय में अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर था उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी भगवान ना करे कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें. वन नेशन वन राशन कार्ड ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं. 20 ലക്ഷം കോടിയുടെ പാക്കേജിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. തിരിച്ചു വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ഈ തറ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്ലേഗ്രൗണ്ട് ആകുന്നത്. രോഗങ്ങൾ 16 channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी। The last